और मुझे अभी रियलाइज हुआ अब तक तो स्ट्रीम म्यूट पे चल रही थी। कोई नहीं दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में। सो व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर वाज, आज का हमारा प्राइमरी टास्क इज टू बिल्ड दीज एक्शन बटन्स, जो कि हम कल करने थे, बट इन द एंड वी वर स्टक विथ दिस क्लिक मी थिंग, आई मीन द फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, जो कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। बट nonetheless आज हम ये करेंगे, दैट इज अवर प्राइमरी टास्क टू डू, एंड देन देयर इज दिस इशू एज वेल, जो ये आ रहा है ये फिक्स करेंगे, वॉट एवर दिस वार्निंग इज, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जो चीजें बताना चाहता हूँ आर, सो रिएक्ट टोस्टिफाई में हम यहाँ पे कल जैसे बाउंस दे रहे थे, तो इट वाज नॉट, जो पॉपअप है हमारा जो टोस्ट आ रहा था वो बाउंस के उसमें नहीं आ रहा था, राइट। सो और हमने स्ट्रिंग दिया था तो नहीं आ रहा था, एंड व्हेन वी वर लाइक गिविंग विदाउट गिविंग इट स्ट्रिंग, तो वो एरर दे रहा था कि इट्स लाइक नॉट डिफाइंड। सो व्हाट इज supposed to be done in the ideal case is write this, I mean import this bounce from the react toastify and then use it like an object. That is the first change which is supposed to be done, right. तो इसको कमिट कर देते हैं, एंड एज वी ऑल नो, क्या अब कल से हम फ्रॉम यस्टरडे वी आर फॉलोइंग दिस कमिट लिंट थिंग। So let's quickly go and let's see in which category does it fall, right? So so it will fall under style, if I'm not wrong, right? Performance doesn't make sense, fix feature refactor. Yeah, we'll put it under style. And for that we need to basically do this, remove this whole button thing, right? So let's quickly do that. And if I'm not wrong, now there's only two change: style bounce animation to toes, and we will commit it, and we will do a control Z. Now the second thing जिसके साथ हम कल stuck थे was this form dot set value, है ना। तो मैं क्या कल ट्राई कर रहा था कि एक ही सेट वैल्यू में सब सारी वैल्यूज चली जाए, राइट। तो मैंने देखा दैट इज नॉट लाइक नॉट, दैट वाज नॉट हैपनिंग। सो व्हाट द सॉल्यूशन इज, हम एक एक वैल्यू को करके सेट करेंगे, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू विल सेट इट डिफरेंटली, राइट। सो एंड सिंस हमें सारी, हम यूजर को ऑप्शन देंगे सारी ही वैल्यूज एडिट करने का, यहाँ से अगर हम ये ले लें सारी ही वैल्यूज एडिट करने का ऑप्शन देंगे उसे, तो इट, आई मीन इट मेक्स नो वो डिफरेंस के यू नो कि लेट्स से सारी वैल्यूज दें या नहीं दें, क्या करें, तो सारी वैल्यूज ही एडिट होंगी, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज दे सकते हैं, तो दैट विल बी फाइन बाय अस। तो हमें एटलीस्ट फंक्शनैलिटी पता चल गई कि कैसे बिल्ड होगी, राइट। तो अभी हम इसे सेव करके वी कैन स्टार्ट विद द फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई गेस, एंड वी विल पुट हियर the exact buttons which are supposed to be there, right. So for that, what icons are we using in our project? I'll go to the package.json, and if I'm not wrong, I'm using MUI icons, right? Yes. So I would need, okay, in fact, I already might be having, yes, तो पढ़ा क्यों मैंने? Anyhow, side nav bar will go and see pencil icon and trash icon. Okay, we are using it from this. Makes sense. And so we'll go here and we'll see if we are using we are using icons, right. So we'll simply just put it down, remove this, remove these, and save it. Okay, it is like running. Okay, तो meanwhile दोस्तों एक सेकंड दो,
Yeah. So meanwhile this is saving, we can start copying the more things. So if we go to this, yes, तो ये उठा लेते हैं हम, and in actions यहाँ पे, और मे बी नॉट इवन हेयर, ओके हाँ यहीं पे, यस यहाँ पे लेट्स पेस्ट फर्स्ट एक्शन and then we will have one more icon, trash icon. और इसको कर देते हैं डिलीट, इसको कर लेते हैं कॉपी, राइट। एंड सो इफ आई कम हियर, अरे यार सेव क्यों नहीं हो रहा है, हो तो गया, अच्छा चलो थैंक गॉड, राइट। तो एटलीस्ट जब हम होवर कर रहे हैं तो वी आर एबल टू सी करेक्टली, राइट। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो मेरे को चाहिए यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, right? Okay, cool. So this is fixed. Now what I need to do is I'll do a flex here. Okay, size reduced significantly. I need bigger size. So 50 pixel might not be enough. Background green 500. Let's see कितना width है इसका. Oh, yes, this is very less. Let's make it 100 pixel. एंड आई गो यहाँ पे इसे 100 पिक्सल कर देंगे. सो यस, मेक सेंस. नाउ इफ आई कम डाउन, जस्ट जस्टिफाई सेंटर. नहीं मजा नहीं आया, इवनली कर देते हैं, इवनली. आई मीन मजा नहीं आ रहा जस्टिफाई ना करके. जस्टिफाई ना करके अगर मैं यहाँ पे एम आर इज 1, एम एल इज 1, राइट एंड लेफ्ट, ओके, तो mx1 and mx1 कर दूं. Okay, let me do a thing. Remove this space, justify evenly. Let's see what happens now. Justify start करके देखते हैं. Justify. Yes, मेरे को वो उसके अंदर ही चाहिए. मैं इसका साइज छोटा कर दूंगा तो it won't make any sense. Let me do a mx itself.
इनफैक्ट वही कर देते हैं, m2 m2 yes, in fact not even two, let's do it one 5 पिक्सल आइश। यस राइट। और मेरे को एक चीज और जस्ट रियलाइज हुई, लेट मी डू अ लॉरम 100 नहीं हुआ no problem and just take this, I'll see। तो यहाँ तो सही है। ओके ये वाला की याद रखना दोस्तों, ये ऐड करना है राइट। हाँ तो देखो ये कमेंट बहुत बड़ा हो गया, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं इसको टेक्स्ट एलिप्सिस कर दूं या ऐसे ही रहने दूं। Yeah, then CSS of all of this is getting messed up. In that case डेबिट का ही तो सीन है, बस डेबिट को कर देते हैं वो। कहाँ है यहाँ पे, ये राइट फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, सही तो लिखा है यार। नो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस नॉट। वो मैं और मैंने वहां पे फ्लेक्स लिखा ही क्यों है द वेरी फर्स्ट प्लेस। हाँ सी, इट इज फाइन, this also works right if user has a huge wo, so this works। cool now। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतने सब में सब सही है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, हमें चाहिए कमेंट्स में regex में ये भी ऐड कर दो। ये को राइट। अभी हमें क्या करने का है, ये हो गया। अभी मेरे को चाहिए कि मैं अगर ये एडिट पे क्लिक करूं तो इस वाले का वो खुल जाए, अगर मैं इसे डिलीट पे क्लिक करूं तो ये वाला वो हो जाए राइट। right, so for that what we can do is, रुको एक सेकंड, पहले ये 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 कर देते हैं यहाँ पे, ये इसको कैसे स्केप करते हैं।
ठीक है, ऐसा करते हैं ना। हाँ, ये हो गया। ये इसके बाद हम क्या करने जा रहे थे, जस्ट फॉरगॉट, भूल गया। अच्छा, इसका क्लिक राइट। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म को बंद, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे हम। लेट्स क्रिएट अ इवेंट लिस्टनर हैंडल एडिट button, right? This is was, and not just that, we are going to accept an index, right, from here, और इसको लेके हम डाल देंगे वहां पे, राइट। तो अभी जो भी इंडेक्स होगा, तो लेट टेम्प ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शंस, और वो वाला इंडेक्स का वैल्यू है ना, और फॉर्म डॉट सेट वैल्यू अमाउंट टेम्प ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट, और इसी तरह 5 हो जाएंगे हमारे। कमेंट ट्रांजैक्शन नेम, ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन डेट, और इसके बाद हम कर देंगे सेट ओपन को ट्रू। कुल, तो अभी डालेंगे हैंडल एडिट बटन, यहाँ पे उठाएंगे इसे, यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हम इंडेक्स के साथ पास कर देंगे। अभी इंडेक्स कहाँ से आएगा, इज अ वेरी ओके कूल, so we got an index from here, cool. So if I'm not wrong, if I click this, very good, a lot of things came and not came. I clicked on second, but it is showing me first. And if I click on this, still getting. Okay, part values are correct, part values are wrong. Okay, 1, 2, 3, I can't, no one can go. And then comments. Why is it so? So it's like of type. Okay. तो हमको बहुत सारा काम इसमें अभी यहाँ से सही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लेट्स डू अ log of what we are getting in temp transaction. ठीक है, लेट्स सी। तो अमाउंट इज 1, 2, 3, कमेंट्स आया, लेकिन इट weren't able to put it properly. डेट आया, चलो ट्रांजेक्शन नेम आया, टाइप में डेबिट आया, ठीक है। फॉर दैट हम फॉर्म से देखते हैं, कमेंट्स इज द राइट वैल्यू, so that is the first thing to do. Let's see, ट्रांजेक्शन अभी आ रहे हैं, अभी टाइप की बसड़ है, राइट। फॉर टाइप मैं ट्रांजेक्शन्स को सेव कैसे कर रहा हूँ,
हाँ जो भी वैल्यू आ रही है, और वैल्यू इज डिफाइंड at the form, right? So let's quickly go to the form. Calendar, second दोस्तों, calendar add comments से पहले ये ना amount credit, yes, value is equals to debit, value is equals to credit. और वैल्यू में टाइप में डेबिट डाल रहे हैं हम, तो फिर वो क्यों नहीं हो रहा है? Okay, because form field select default value is this, है ना? So I believe this is wrong. Field dot value, field dot value, field. मुझे कुछ लगता है मैं हार्ड कोडिंग में names everywhere. It's not transaction type, it's type, I guess. हाँ टाइप ही तो है. टाइप कड़ी चूचा. And this is still not making any sense. Okay, fast refresh हो गया. Let's see. हाँ हो गया. Cool. Silly mistakes. Silly mistakes. And if user changes anything here, let's say 123, and I do a just to check add. Okay, not at the rate. It should be an and element. Yes. तो अब द थिंग इज, ने ये बना दी एक नई एंट्री, जबकि मुझे चाहिए थी कि वही एंट्री एडिट हो, राइट? और ये भी मेरे को फिक्स करना है. करीचे चुपचाप. तो सबसे पहले उसको देखते हैं, सीएसएस बाद में देखेंगे. अब क्या दिक्कत है, उसने एक नई एंट्री बना दी विच मेक्स सेंस अकॉर्डिंग टू अवर कोड. सो इफ आई एम एडिटिंग इट, तो इफ आई एम एडिटिंग इट, तो मैंने वो वैल्यू वहां से वो कर दी, राइट? एंड आफ्टर ओपनिंग इट, अगर मैं वो अगर यूजर ने कैंसिल किया, तो अगर यूजर ने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा? फिर तो मुझे वो रिटेन करना चाहिए वैल्यू को, राइट 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 राइट, मेक्स सेंस. अगर उसने यूजर ने कैंसिल कर, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं ट्रांजैक्शन डॉट इंडेक्स को कर दूं नल, है ना? तो इफ यूजर क्लिक्स ऑन दिस एंड इट विल, ओके, रिफ्रेश हो गया, हार्ड रिफ्रेश हो गया, नो प्रॉब्लम. If a user does this, and so it will break.
बट व्हाई डिड इट ब्रेक? बिकॉज मैंने उसे नल कर दिया, नल नहीं होगा। बट एनी हाउ इफ आई डू नल, यूजर ने कैंसिल कर दिया, तब क्या होगा? यहाँ पे आके मैं इसे सेट वैल्यू करूँगा, and then when user clicks on that, मुझे somehow अगर मैं एक स्टेट मैनेज कर लूँ अलग से एडिट का तो, but why do I feel like that is a very dumb and brute force kind of approach? Edit action false. यहाँ आके मैं ऐसे भी कर देता हूँ अगर ट्रू, राइट। तो अगर ट्रांजैक्शंस में हमें जो वैल्यूज मिली, जो नई वैल्यूज मिलेंगी, अगर वो एडिट एक्शन नहीं है, अरे यार क्या हो रहा है, वो अगर एडिट एक्शन नहीं है तो डू दिस, कोई दिक्कत नहीं है। बट if that is an edit action, so what I want to do is uh, what I want to do is transactions dot index equals to value. Okay, then instead of false, save it as -1 and set edit indection. We put in index, and if the edit action is equals to -1, then do this, else do an edit action, because मैंने index सेव कर दिया था, and then form को reset us. Let's see if it works. I really hope it works. Mm, mm, mm.
right? So I'm not sure if this is the most optimal solution, but okay, this is working, right? And if this is working, we'll go through it, go with it, and I'll look into it tomorrow or whenever I get time, if this is the most optimal solution for this particular uh, you know thing, right? And so I believe we have achieved our edit functionality and feature edit action on create new page imported icons for edit and delete actions fixed lil css as well. What all changes, what else we have done? The regex thing, updated regex for comments to allow 3 more characters. Handle edit, handle edit action holds the logic behind editing. और ये सब तो CSS fix था, right? And so we are cool up to here. Now comes the delete, right? So similarly, we did this. We are gonna do a handle delete बटन जहाँ पे हमें इंडेक्स मिलेगा, और अब यहाँ पे है सीन ना उस पर how to remove an element, how to remove an object from array of objects in JavaScript. अरे फिल्टर ही डाल दूं क्या? This is what I'm thinking. Left temp transactions is equals to transaction or filter item comma index and
x कर लेते हैं, no confusion. Index is not equal to index. If this will be true, it will be returned. हाँ सही तो है. Temp transactions, and then I simply do a set transactions of temp transactions, and this will go to delete, and same as here, index. And if I click this, cool, let's go. Right, but at the same time, one more thing I have to do. But I allowed that. राइट, अभी मेरे को क्या चाहिए कि मैं ये भी ऐसे वो हो जाए. राइट, हल्का सा CSS फिक्स. तो इसकी करेंगे हम हाइट फुल. नहीं 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 हो रहा. Okay, what we can do is I believe इसमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे. Cool ना. And need to do one last thing here, which is add. ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे को. I need more vibrant colors for this. So I'm gonna go and search for form message. Yes, and this is first, second, third, fourth, fifth class. Name is equals to text. हाँ अभी आया ना, थोड़ा brightness आया है कलर में, है ना. I will close this, and if I cancel it, and I believe everything is good for this now. Go to the, what did I just, what all changes did I make in this one as of now? Delete functionality. तो let's quickly, ने last time क्या लिखा था GitHub में, GitHub, where is my ROI monk? I believe server. Yes. Cool. Commit and push. Delete action. Create new page.
हाँ, और कुछ ज्यादा चेंज किया नहीं ना, हल्का सा CSS ही तो फिक्स किया उसके अलावा। हाँ, ये हल्का सा CSS फिक्स है। ये सब क्या है भाई? तो हमने आज का गोल तो दोस्तों देखो पा लिया। अच्छा नहीं, एक चीज और बाकी है अभी। एक चीज और बाकी है। Who will guess it right? Tell me. तो this thing is basically left। ये एरर हम पा रहे हैं, राइट? तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो what it says basically is कि description is missing from the alert dialog content, right? So what is happening here is I'll tell you। यहाँ पे हमने अलर्ट डायलॉग कंटेंट डाला है, यहाँ पे हेडर है, टाइटल है, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे अलर्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, है ना? और प्लीज एंटर द ट्रांजैक्शन डिटेल्स फॉर दिस portfolio, and if I save this, I believe this should be gone proper, like पूरी तरीके से it should be gone। See, gone, right? बट हल्का सा हम इसमें वो करेंगे, इसमें डालेंगे हम 75। हाँ, अब let's try a few numbers, right? What difference it makes? हाँ, 50 is more like it। So, and it's a bug fix। कमेंट कर देते हैं फिलहाल। अब इसके बाद अगर यूजर ये वाला कैंसिल दबाता है तो सही है, बट अगर ये वाला कैंसिल दबाता है तो क्या होगा, ये भी तो हमें करना होगा, राइट? राइट, ये वाला कैंसिल दबाने पे क्या होगा? तो ये वाला कैंसिल करने पे ज्यादा कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट redirect him to the dashboard, right? So if I'm not wrong, we anyhow are using use router c यहाँ पे, right? तो अभी बस router डॉट पुश में वो डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैंसिल सर्च करते हैं। ये तो अलर्ट डायलॉग का कैंसिल हो गया। दिस इज द वन। इसमें ऑन क्लिक डाल दो। राउटर डॉट पुश डैश board, right? And user simply clicks on it and he's taken to dashboard। cool। तो हमारा create new वाला functionality page is purely done, like purely done। हमने यहाँ पे ये नाम प्रिंट करा दिया, ये सब कर दिया, ये सब कर दिया, यहाँ से यूजर आएगा, कुछ कुछ डिटेल्स डालेगा, राइट?
ऐड करेगा, this gets saved to the database. Cool, right? That is great. He clicks on cancel, he goes to dashboard straight up, right? He presses save, some pop-up will come here. Why is it not coming? Yeah, your portfolio is created successfully, and yep, he is here. Cool now. So I believe cancel button redirection. Cool. So that is great, great job, my guys. Great, great job, my friends. Now what after this? हमने CRUD ऑपरेशन कर लिया, अब हमें चाहिए रीड ऑपरेशन, राइट? सो सबसे पहले अभी कल क्या हम करेंगे, हम पहले ये रिसेंट्स वाला बनाएंगे, इसमें एडिट और डिलीट वाली चीज करेंगे, राइट? सबसे पहले, एंड देन we will के यूजर इस पे क्लिक करे and he is redirected to whatever in this functionality. हम read की functionality update लगाएंगे, ठीक है? But before going, since we have some time in our hand, let's quickly do a check here, right? So if you all remember, हमने अभी just create new में day before yesterday or maybe yesterday I guess ये किया था, यूज फॉर्म वाली चीज कहाँ गया ये सब, राइट? रिजॉल्वर वगैरह। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें भी वही डाल देता हूँ। लेट मी क्विकली गो टू द components side nav bar, let me go to home, right? And okay, we are not using any form here, it's just portfolio name and all, right? तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, न्यू पोर्टफोलियो बटन है, अलर्ट ट्रिगर है, सही है, और इनपुट ऑटो फोकस वगैरह 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 ऑन चेंज में वो पोर्टफोलियो का नाम डाल रहा है, विच इज वेरी गुड। और एरर में हम यहाँ पे एरर सेट कर रहे हैं, बट इसमें वो कहाँ है, सेट पोर्टफोलियो नेम में कैंसिल किया, ठीक है, बटन, राइट? इफ देयर इज नो पोर्टफोलियो नेम कैंट बी ब्लैंक रिटर्न regex टेस्टिंग, राइट? रिटर्न ये वाली चीज वी हैव टू चेक, if that name already exists तो हमें उसे बताना है कि this exists and reroute him to the right route, right? Of course rerouting करनी होगी। ठीक है, ये क्या दो है? अच्छा, it's because that sidebar, okay, never mind। can I go to the, हाँ, राइट, तो यहाँ पे हमें वो करना होगा, तो उसके लिए लेट्स क्विकली बिल्ड अ एक्शन portfolio.js, right? Now export async function search, I mean it's not even search, get portfolio by name, we accept a portfolio name, and then we try, we first get the user's email, and then we try for let's see, we try for what you call const portfolio is equals to we find unique, I guess, right? Prisma में जाके prisma.io orm quick start find, अरे खुल जाए यार, क्यों नहीं खुल रहा है ये?
find screen the database, find many से यार array आएगा basically. Find unique, हाँ ऐसा कुछ ना, yes यही सही चाहिए था. फाइंड यूनिक और डेटा में डालेंगे हम वेयर क्लॉज, वेयर ईमेल, ईमेल है क्या है, स्कीमा में जाएंगे फट से, नॉट इवन है यार. पोर्टफोलियो वाला वो खोलेंगे, पोर्टफोलियो में हमारे पास है ओनर ईमेल, मैं लिख ही लेता हूँ, कॉपी क्या करना, यूजर ईमेल रहे एंड पोर्टफोलियो नेम में, पोर्टफोलियो नेम रहे राइट. एंड if we get portfolio, then return message portfolio access, else return message okay unique name. अटे कुछ आइडेंटिफायर होना चाहिए ना, वैसे यूनिक मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा. Exist, right. And if any error comes, catch कैच में एरर डाल दो, लॉग एरर, रिटर्न मैसेज एरर, राइट. ये डाल देंगे, फट से इंपोर्ट कर लेंगे, क्या नाम है इसका, गेट पोर्टफोलियो बाय नेम यहाँ पे, राइट बाय नेम. आया था यस. गेट पोर्टफोलियो बाय नेम, यहाँ पे देंगे हम पोर्टफोलियो का नाम, const message is equals to, right, if message is equals to unique, unique ही था ना, right. That means portfolio doesn't exist and we'll let him do this, right. यहाँ तक, right. Else if message is equals to access this, हम क्या डालेंगे, set error, return portfolio name already exists, please choose unique name.
full stop, else if it fails, basically error. So I know what to do. And let me just retry same thing. Uh, else set error, something went wrong. Please try again in some time. है ना? Cool. Or if it return, of course. Although we are at the end, so it doesn't matter anyhow. But ठीक है. So if I go to my database and I choose a portfolio name which is this, and so I come here, I do this, and I press a continue, and I'm so screwed. Oh, sorry, put it in different line. So कहाँ रीड आउट कर रहा हूँ मैं? क्रिएट न्यू सही तो है भाई? हाँ, कहाँ जा रहा है वो? अच्छा सही, sorry, I was on the different page altogether. All right, quickly come through it. I just want के ये वाला भी एक कमिट हो जाए तो मजा आ जाएगा अपने को. तो डैशबोर्ड है, राइट? Let's do it. Let's do it. Something went wrong. Please try again in some time. What happened? Wow. इनका हाँ ये था ना. Right. Find first query where owner email and portfolio given. यार मैं भी तो यही कर रहा हूँ.
फालतू के एरर में फंस गए दोस्तों। कल कर सकते थे। इट वाज अ स्मॉल थिंग टू डू। आई थॉट व्हाई नॉट डू इट टुडे इटसेल्फ, बट आई गेस you stuck, huh? It's 11:39 p.m. Okay, okay, fine. फर्स्ट भी तो कर सकता हूँ ना। सॉरी। अरे यार मैं यूनिक खड़ी क्यों रहा हूँ? I need a first. I mean, if I found any, then it will be said no anyhow. अब क्या error आ गया भाई? जब भी मैं पावा something went wrong. Please try again in some time. That means await, await. Think simple, these simple things. Wait. Yes, and it'll be message dot message. Not just be message, it will be, let's say, response. Response dot message. Saila. Continue. Portfolio name only, please use unique name. इसको करो -n. Show it in a different line. Because उसकी width बहुत, never mind. It's not the optimal thing to do. Let me just header में वो डाल रखा है ना. Rotate with this. Come on, dude, give me width, 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 width. 500 pixel. And why is it having a मेरी 2 क्यों है ये? Okay, it makes sense. बट फिर इनपुट का भी तो वो कर सकते हैं. माइंड यार, कोई टेंशन नहीं ना.
Now, meanwhile, this all is happening. I need to do a loading thing on the button. But the core is हमने functionality बना ली है. So let's just quickly do these small things. यहीं पे बना लेते हैं. In fact, false करेंगे हम. Loading response. Right. And whenever user clicks it, हम set loading response को कर देंगे true. Right. And before every return, we do it of false. Right. Right. In fact, उसे रह देते हैं. ठीक है. Button disabled is equals to loading response. अगर ये true होगा तो वो भी disabled होगा. ठीक है. Right. And continue की जगह loading response. अगर true होगा तो मेरे को यहाँ पे loader दिखाना है एक. I'll do something. Yes. Why? String में ही तो सेव इसलिए. भाई इतने एरर्स, इतने क्या एरर्स आ रहे हैं भाई. ठीक है, इसको फिक्स कर देंगे. मार न दे ही मैनू इंतजार में. भाई एक्सेस सही है. Yes. I just need to put a loader. Radix UI icon. Circle. नहीं भी circle. Hmm. If I'm not wrong, spin.
UI icons. Not even icons. I can just use simple progress bar from here. कौन गया अभी तो था पहले मैंने भी क्यों see simple this progress. And so if I click this, hey यार उसका CSS कैसे फिक्स करूँ मैं और उसका कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा यार. Friends, let's do a thing. Let's take it tomorrow. It's very late in the evening for me. I have other things to do as well. कल मिलते हैं आपसे. कल we'll finish this. It's not, I mean, not very वो anymore. Like मेरे को बस उसका थोड़ा CSS fix करना है. More or less the whole feature is developed, right? तो it's no big deal. आप खुद MUI के उसमें जाके कलर वगैरह करके भी कर सकते हैं. If you're following this, I wanna see how to do it. If you want to learn or if you're with me for the progress, we'll do it tomorrow. Join me tomorrow, ठीक है? चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल आप लोगों से. ठीक है, चलो राधे राधे.